Okay. So last class we were discussing about continuity and differentiability. So we have discussed that uh, basic things like limits and derivatives. So सबसे पहले the continuity का concept. Continuity मतलब it's very simple, like it means geometrically it means if there is no break in the graph then it is continuous function. If there is a break then it is non-continuous, it is not continuous. Like say if you draw sine graph, you can see that it is continuous, there is no break in the graph. Or it's a line, so there is no break in the graph, so it is continuous. So if there is break in the graph, it is not in general. If there is break in the graph, it is not continuous. For example, so you can see that there is a break here. So the graph is broken here. Means we can't draw without lifting the pen. If you are able to draw without lifting the pen, that means there is no break in the graph, it is continuous. General concept बता रहे. If there is a break in the graph, it is not continuous. I'll come to that theory, like how can we say what is the definition of continuity. Very basic thing I'm telling, I'm not going deep into that theory and all those things. Just for an example I'm showing this. Look at this graph. So we can see that except at 2, everywhere the function is continuous. Is my voice clear to you? Yes, sir. Yeah. Except at 2, there is no problem. The graph is not having any break. So it is continuous everywhere except at the point 2. So now look at 2. Limit of that function, whatever this function, when x approaching to 2 from the left side, when you are approaching 2 from the left side, where the graph is approaching, the graph is approaching the value, you can see that 3. So when left hand limit, you can see that left hand limit is equal to 3. Now right hand limit matlab you are approaching the function, limit of that function, you are approaching the function from the right side. So when you approaches 2 from the right side, you can see that the function value is getting closer to the value 4. So you can say that the right hand limit is equal to 4. That implies left hand limit not equal to right hand limit. That implies limit does not exist. So सबसे पहले एक कंडीशन है कि if you want to say a function f of x is said to be continuous at a point
x is equal to a, the first condition is limit of that function as x approaches to a should exist. So either limit does not exist means लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो नॉर्मल लैंग्वेज में बताएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू में जा रहे, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो दूसरा वैल्यू में जा रहे, ऐसे जाएंगे तो पक्का देयर विल बी अ ब्रेक इन द ग्राफ, सो दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. सो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि लिमिट शुड एक्सिस्ट. नाउ सेकेंड एक चीज देखो, लिमिट एक्सेस करेंगे तो कंटिन्यूअस होते हैं क्या, देख लो. I'll show you another example. See, in this case still इधर also आप देखेंगे तो टू छोड़ के टू में देखेंगे तो टू में ऐसे हो रहे कि देयर इज ए ब्रेक, टू में फंक्शन डिफाइंड नहीं है. देखो लिमिट एक्सेस कर रहे, limit of f of x as x approaches to 2 from the left side. So you are approaching 2 from the left side. You can see that the function value is approaching to 1. You are approaching 2 from the right side. Then also the function is getting closer and closer to 1. When you approach us from the left side, the function is getting closer to 1. When you are approaching from the right side, then also function is getting closer to 1. So limit exists. Limit exists. Means limit of f of x, in this case we can say as x approach to 2 is equal to 1. But still the function is not continuous. So the first type of discontinuity is actually known as, it is in your textbook, not name is not there, it is known as jump discontinuity बोलते हैं इसको. इसको बोलते हैं जंप डिस्कन्टिन्यूटी, इसको बोलते हैं पॉइंट डिस्कन्टिन्यूटी बोलते हैं. नाम वगैरह कुछ पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ बता रहे. देखो फर्स्ट में मैंने बताया था लिमिट एक्स, सबसे पहले लिमिट एक्सेस करना है. सो ओके, फर्स्ट केस में लिमिट एक्सेस नहीं कर रहे था, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है. बट सेकंड सिचुएशन मैंने दिखाया उसमें से लिमिट एक्सेस कर रहे बट टू में कंटिन्यूस नहीं है. सो उसका मतलब ये एक तो सेकंड कंडीशन ऐसे है कि उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ टू, सॉरी एफ ऑफ ए, जो पॉइंट में कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं, एफ ऑफ ए शुड एक्सिस्ट. एफ ऑफ ए एक्सिस्ट होना चाहिए. दैट मीन्स उस पार्ट कौन सा पॉइंट में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू डिफाइन होना चाहिए.
ओके मैंने ये सेम सेकंड एग्जांपल में फिर से मैंने वैल्यू एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू, देखो एफ ऑफ टू भी मैंने डिफाइन कर दिया, so, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, इधर एफ ऑफ टू का वैल्यू टू दे दिया, एफ ऑफ टू का वैल्यू टू दे दिया, बट स्टिल दैट कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इज देयर। सो सेकंड केस में लिमिट एक्सिस्ट कर रहे, एफ ऑफ टू में फंक्शन का वैल्यू भी एक्सिस्ट कर रहे, बट स्टिल इट इज नॉट कंटिन्यूअस। सो इसको कंटिन्यूअस होना है तो एक्चुअली दैट लिमिट वैल्यू शुड बी दैट एफ ऑफ टू शुड बी इक्वल टू वन, इधर जो वन आएंगे तो एफ ऑफ टू का वैल्यू वन आ गया, सो दिस विल बिकम कंटिन्यूअस। सो उसका मतलब थर्ड कंडीशन लिमिट एक्सिस्ट, देन उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू एक्सिस्ट होना चाहिए। सो तीसरा कंडीशन दैट लिमिट एंड दैट वैल्यू एट दैट फंक्शन सेम होना चाहिए। If these three conditions are satisfied, then we can say that the function is continuous at that particular point. So in general, इतना ये continuity का basic definition. If you continuous मतलब we can draw the graph without lifting the pen. Normal sense में बताएंगे तो that means there won't be any break in the graph. Okay, then theoretically how can we prove that? So theoretically बताएंगे तो एक पॉइंट में x इक्वल टू ए, एक पॉइंट में कंटिन्यूअस है करके दिखाना है तो सबसे पहले द लिमिट शुड एक्सिस्ट एट दैट पॉइंट। लिमिट एक्सिस्ट करेंगे तो कंटिन्यूअस होना करके नहीं, क्योंकि सेकेंड सिचुएशन में देखा लिमिट एक्सिस्ट कर रहा था। जन जो पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करना था उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू एक्सिस्ट होना चाहिए। सो सेकेंड सिचुएशन मैंने वो भी दिखाया था, फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ टू में टू दिखाया, बट स्टिल दैट वाज नॉट कंटिन्यूअस। ऐसे फंक्शन का वैल्यू एक्सिस्ट होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन दैट वैल्यू मीन्स जो पॉइंट में आपको कंटिन्यूटी चेक करना उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू एंड उस पॉइंट में लिमिट बोथ शुड बी सेम होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, एंड if you want to prove the continuity in a particular interval like some from a to b, so I say a to b 2 to 3 just for an example 2 to 3 ये एरिया में कंटिन्यूअस है करके प्रूफ करना है तो उसके बीच में नहीं तो उसके बीच में हर एक पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर? तभी हम बोलते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो ये फंक्शन एक पॉइंट में कंटिन्यूअस होने का डेफिनेशन बोला है, उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू एक्सिस्ट होना चाहिए, उस पॉइंट में लिमिट एक्सिस्ट होना चाहिए, एंड दैट लिमिट एंड दैट फंक्शन का वैल्यू बोथ शुड बी सेम होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at that particular point. Is it clear? And you know that for polynomial function the graph is a for every polynomial function for every polynomial function the graph is a smooth curve. The graph is a smooth curve. कोई भी polynomial functions, a linear function तो we know that the graph is a straight line, quadratic है तो हमें पता है कि parabolic shape है। वैसे for every polynomial the graph will be like this kind of shape, it will be this kind of shape
कभी ये वाला पोर्शन ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, नहीं तो इधर एन बो एन में नीचे आते हैं, नहीं तो ऊपर जाते हैं, वो अलग बात है, बट द ग्राफ इज ऑलवेज a smooth curve. So we can say that every polynomial function is continuous. Every polynomial function is continuous. We can say every polynomial function is continuous. Similarly, आपने trigonometry function का ग्राफ देखा था. Trigonometry function का ग्राफ में भी sin x, cos x, सो tan x में आप पूछ सकते हैं कि सर उधर थोड़ा सा ब्रेक है, बट tan x में ब्रेक उसी पॉइंट में आ रहे हैं कि जो पॉइंट में फंक्शन डिफाइन नहीं है. सो उस पॉइंट में फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसके बारे में ज्यादा सोचने का कोई जरूरत ही नहीं. सो वी कैन से दैट एवरी trigonometric function is continuous in its domain. Every trigonometric function is continuous in its domain. So tan x में ब्रेक क्या आ रहा है, कोसिकेंट x में ब्रेक क्या आ रहा है, सीकेंट x में ब्रेक क्या आ रहा है, कोटांजेंट x में ब्रेक क्या आ रहा है, बट जो ब्रेक्स आते हैं उसी पॉइंट में आ रहे हैं कि जिस पॉइंट में वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है. सो जो पॉइंट में फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसके बारे में कोई डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं. सो वी नॉर्मली से एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन. उनका डोमेन में वो कंटिन्यूअस है क्योंकि उनका डोमेन में उनको ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आते हैं. ठीक है. And there is some algebra like this, like if two function is continuous, the sum is also continuous. If two function is continuous, their product is continuous. If two function is continuous, like another thing, if f of x and g of x are continuous function, means दोनों ऐसे फंक्शन कंटिन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं है, देन एफ प्लस जी, क्योंकि दो फंक्शन ऐड करेंगे तो न्यू फंक्शन मिलेगा, आपने लास्ट ईयर पढ़ाई किया था. एफ माइनस जी, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको फंक्शन मिलेगा. एफ इंटू जी मिलेगा, एफ बाई बी. ये सभी केस में आपको नया फंक्शन मिलेगा. ये सभी फंक्शन इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस, एफ जी कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस है तो दिस आर ऑल्सो continuous, क्योंकि that means if you add two continuous function you will get two continuous function. If you subtract, if you multiply or if you divide, इधर एक condition है कि provided g of x must be not equal to 0, क्योंकि g of x 0 है तो denominator define नहीं होगा. Okay. एग्जाम्पल मैं बाद में दिखाता आपको, ग्राफ करके दिखाता हूँ. अभी देख सेकंड है. See, I'm sharing my computer screen. I hope you can see. Can you see it? Yes, sir. Yeah, see. Look at the graph of sin x. So do you know this is a graph of sin x? Correct? So it is continuous. There is no break.
cos x का ग्राफ जो ब्लू लाइन में, दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, देयर इज नो ब्रेक। अभी sin x प्लस cos x का ग्राफ देखो, sin x प्लस cos x, sin x का प्लस cos x का ग्राफ है आपको जो ग्रीन लाइन में मिला है, sin x plus cos x. So I'm just removing that, just see, this is the graph of sin x plus cos x. You can see that there is no break, so it is continuous. Understood? And they go sin x into cos x. Sin x into cos x का ग्राफ देखो. You don't need the proof of those things, but just to understand the concept, I'm just showing it with the help of the graphing calculator. Sin x into cos x. So we know that sin x and cos x are continuous function, then this is the graph of sin x into cos x, and that is also continuous. अभी sin x minus cos x का ग्राफ देखो, that is also continuous. अभी sin x divided by cos x, sin x divided by cos x का ग्राफ देखो, that is also continuous. But the problem is, you can see that, sir, here graph is जैसे for example -8 के जगह -4 5 के जगह, there are break there, but that are the points where cos x is equal to 0, because when cos x is equal to 0, the function is not defined. So that is what I told you, trigonometry functions are continuous in its domain. जो डोमेन जो डिनोमिनेटर 0 होते हैं उसी पॉइंट में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है. जो पॉइंट में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, जैसे एक बच्चा इधर 12वीं में पढ़ाई नहीं कर रहे, सो उनके बारे में, उनको 12वीं में कितना मार्क मिला, उनका मार्क और हमें इधर काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे स्कूल में कोई संबंध ही नहीं. जैसे इधर जब sin x बाई cos x, सो sin x बाई cos x का जो डोमेन में जो डिनोमिनेटर 0 आते हैं तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, सो उसी पॉइंट में हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं. So बाकी सब पॉइंट में function is continuous. We can see that there is no break in the graph. So that is what I told you. If two functions are continuous, then their sum is continuous, their difference is continuous, their product is continuous, their quotient is continuous, provided denominator must be not equal to 0. Because whenever denominator is equal to 0, the function is not defined. Clear? इसका proof और आपको नहीं चाहिए, जैसे as a result you should understand that. That's all. Now, इसका यूज कब आएगा, कभी बोलते हैं कि प्रूफ करो, जैसे sin x plus x square is a continuous function. So we can say that sin x is a trigonometry function, it is continuous. X square is a polynomial function, it is continuous. So if two functions are continuous, then their sum is also continuous. So sin x plus x square is continuous everywhere. सभी पॉइंट में वो फंक्शन कंटिन्यूस है. ऐसे प्रूफ करने के लिए एक काम में आएगा. क्लियर? तो उसका थियरी वगैरह, जैसे हाउ, जैसे मैंने तो एग्जांपल दिखाया, जिस फंक्शन का एग्जांपल से दिखाया है, बट उसका थियरी वगैरह है तो आप हायर क्लास में, जैसे व्हेन यू डू बीएससी मैथ्स नहीं तो एमएससी मैथ्स, दैट टाइम यू विल डिस्कस, यू विल स्टडी. अभी उसका जरूरत नहीं है. सिर्फ इतना समझना है कि इफ टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, देयर सम, देयर डिफरेंस, देयर प्रोडक्ट एंड देयर कोएफिशिएंट इज कंटिन्यूअस. नाउ कमिंग टू क्वेश्चंस. Now we will do more problems. So basically continuity का definition उतना है कि एक पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूअस है करके बोलना है. तो मैं स्लो जा रहा है इसलिए कि जो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बाकी एवरीथिंग इसके ऊपर बिल्ड करके जा रहे हैं. सो एक पॉइंट में कंटिन्यूअस है करके बोलना है तो उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू एक्सिस्ट होना चाहिए, उस पॉइंट में लिमिट एक्सिस्ट होना चाहिए, एंड दैट लिमिट एंड दैट फंक्शन का वैल्यू बोथ शुड बी सेम होना चाहिए. तभी हम बोल सकते हैं कि लिमिट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. सो एक सिंपल क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द फंक्शन is, it's a function f of x,
f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3, and x is equal to 5. One of the simplest questions. So depending on the marks, you should approach this question. So you can see that one way you can say f of x is equal to 5x minus 3 is a polynomial function. Polynomial function है क्योंकि linear function है. Polynomial function with a degree 1. So it is continuous. It is continuous everywhere. So it is continuous everywhere है तो सभी polynomial function is continuous at all points. Every point में continuous है. So that means it is, that implies, so it is, that implies it is continuous at x is equal to 0, minus 3 and 5. Not only at these 3 points, it is continuous at each and every real number, each and every point. Now, but I will theoretically also I will prove. So theoretically proof करना है तो limit, we have to prove that limit exists. So just for the at x is equal to 0, I will show little detail. So जब limit निकालते हैं हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ते, बट वो उसी सिचुएशन में चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेट निकालना ओनली व्हेन लेफ्ट साइड में उस पॉइंट का लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू अलग है, राइट साइड में फंक्शन का वैल्यू अलग है. फॉर एग्जांपल, just for example, if I define like this, f of x is equal to 5x plus 3 when x is less than or equal to 3, or x cube minus 7 when x is greater than 3. Suppose in this case, if you find the limit at 3, so there may be a problem. There is a problem that left side of 3 the function is different, right side of 3 the function is different. So you have to find the left hand limit separately, right hand limit separately. But normal function there is no need. Just f of x is equal to 5x minus 3. क्योंकि everywhere it is 5x minus 3, so there is no need to find left hand limit and right hand limit separately. Say at x is equal to minus 3 में, so limit of f of x as x approaches to minus 3, which is equal to limit of 5x minus 3 as x approaches to minus 3. So one method is direct substitution. Direct substitution करो 5 into minus 3, minus 15 minus 3, which is equal to minus 18. Now, so limit का वैल्यू मिल गया. अभी f of minus 3 उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू, so उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू 5 into minus 3 minus 3, that is minus 15 minus 3, that is minus 18. That means a limit of f of x, now the limit of 5x minus 3 as x approaches to minus 3, that is same as f of minus 3. So that means f of x, now 5x minus 3 is continuous at x is equal to minus 3. Similarly, you can prove at 5 also. But I want to tell you one more thing. कभी कभी क्या होते हैं, एक टेक्निक रहते हैं, जैसे
फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक टेक्निक है कि हम ऐसे देते हैं कि h goes to 0 x के जगह a माइनस h. सपोज आपको x approaches to a, this is one of the most useful technique. X approaches to a, where x is approaching to a. So in this case आपको left hand limit चाहिए, right hand limit चाहिए. So in some situation none of the methods will work, like direct substitution, formula, algebraic identity, कुछ भी काम नहीं करेगा, तब ये काम करेगा. This is the most general technique. If you want to find the left hand limit as x approaches to a, आपको क्या करना है कि आपको लिमिट h goes to 0 दे देना and x के जगह a minus h लिख देना. So I just want to explain that method here, that is why I am doing in this way. Right hand limit है तो h goes to 0 दे देना, x के जगह a plus h दे देना. This is one of the most important concept. अभी मुझे इधर चाहिए, so left hand limit, I am going to find left hand limit. Left hand limit मतलब limit of 5x minus 3 when you are approaching 0 from the left side. उसके लिए मैंने टेक्निक यही बोला है कि सो आप h goes to 0 दे सकते हैं एंड 5 इंटू x के जगह a माइनस h, इधर a के जगह, इधर हमारा a 0 था, सो x के जगह 0 माइनस h माइनस 3. वन सेकेंड, हाँ 0 में कर रहे. सो दैट इम्प्लाइज दैट इक्वल्स लिमिट ये हो h goes to 0, 5 into 0 0, 5 into minus h minus 5h minus 3. So direct substitution कर देना, 0 minus 3 minus 3. So left hand limit मिला minus 3. अभी right hand limit, right hand limit का टेक्निक, I just want to explain this technique, that's all. इधर एक्चुअली ये टेक्निक यूज करने की कोई जरूरत भी नहीं. 5x minus 3 as x approaches to 0 from the right side. So right hand limit है तो आपको टेक्निक यही अप्लाई करना है कि h goes to 0, h को 0 दे देना, x के जगह a plus h, so 0 plus h minus 3. So which is equal to limit h goes to 0, 5 into 0 0, 5 into h 5h minus 3. Now direct substitution, 5 into 0 0 minus 3 minus 3. So left hand limit is equal to right hand limit. That implies limit x is limit of 5x minus 3 as x approaches to 0 exists, and that is equal to minus 3. So limit x, अभी आपको चेक करना है कि 0 में फंक्शन का वैल्यू, सो 0 में फंक्शन का वैल्यू which is equal to 5 into 0 minus 3, which is equal to minus 3. So you can see that the limit exists and function का value at that particular point में minus 3. So that implies, this implies limit of 5x minus 3 as x approaches to 0, it is same as f of 0. That implies 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0. So these are the different methods. So actually look at the question and how much mark it carries. So according to that, only 1 mark question, so direct you can write this is the polynomial function, so it is continuous everywhere, so it is continuous at 0, minus 3 and 5. Now definition अप्लाई करके कैसे प्रूफ करेंगे? डेफिनेशन अप्लाई करके प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले लिमिट एक्सिस्ट करके प्रूफ कर देना.
सो लिमिट एक्सेस करने के टाइम दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सेस राइट हैंड लिमिट एक्सेस एंड बोथ आर इक्वल प्रूफ कर देना, बट दैट इज नीडेड ओनली व्हेन उस पॉइंट का लेफ्ट साइड में फंक्शन का डेफिनेशन अलग है, राइट साइड में अलग है। ऐसे है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेट निकालना, नहीं है तो देयर इज नो नीड। सो इसलिए मैंने एक डायरेक्ट दिखाया, दैट इज इनफ। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट है तो कैसे निकालेंगे, तो आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, वन ऑफ द टेक्निक